वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज है 14 अप्रैल। आज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज बेंगोली न्यू ईयर है। हम बंगालियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। तो आज का वीडियो तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही। और आज की वीडियो स्पेशली मैं फ्राइड राइस बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और फ्राइड राइस के साथ मटन, एग और फिश करी, वो भी सब आपको खा के दिखाऊंगा। No! God, please, no! 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 सो वॉच द फुल वीडियो एंड वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही। तो पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स गो टू कुक फ्राइड राइस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली boil the rice separately, then pour some oil in the oven and let the oil gets heated. Oil is heated now. You see, I'll be pouring some carrots. I put some carrots and ginger in the oven. Now putting some salt in it. And then the long and the elaichi. Now I will be pouring the rices. Now I will be pouring ghee. Now it is complete. You can see now fried rice is complete. Now we'll take and say after testing it. तो ये देखिए क्या है, देख रहे हैं आप? ये देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है खा के। तो अभी मैं खा के दिखाता हूँ आपको कैसा हुआ। खास करके फ्राइड राइस बहुत ही अच्छा हुआ। Smash the like button. अभी खा रहा हूँ फिश करी। Seriously. अभी खा रहा हूँ चिकन। तो देखिए आप, Subscribe. अभी खा रहा हूँ मटन। देखिए बहुत ही टेस्ट हुआ मटन। और कम
subscribe. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और जैसे कि आपको पता है कि एलपीयू में एडमिशन होना शुरू हो गया, तो गो एंड टेक योर एडमिशन। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।